इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone, and a warm welcome to our webinar series, Business Opportunity Over Chai. It's our privilege to talk about the business opportunity with each and every investor who has joined us for this particular webinar. The aim which Franchise India team keeping today is to provide you the correct and the complete understanding about the business option with the help of the presentation from our brand side. This is a 45-minute session. First, we'll talk about the business opportunity. Then we'll move towards a panel discussion. We would love to take all your queries. Hence, we request each one of you to share your queries in question and answer box. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am for this particular webinar. They'll be talking about the industry as well as the business opportunity. And the business opportunity which we are delighted to present and launch today through this webinar is Sethi's. Sethi's restaurant, well-known business, started in 1974 by late Bhushan Sethi ji at New Delhi. Sethi Dine was incorporated in 2021 with a brand legacy of almost 5 decades. The brand provides the best customer experience to the client by offering the best quality food and service. They have a strong experience of 25 years in the industry. And to talk more about the brand, about their journey, we have invited Sumit ji, will be sharing his as well as his father's and family journey. Thank you so much, Sumit sir. आज हमें join करने के लिए, we understand you are not at the place, but still you got a time to launch your brand through the platform Franchise India. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. हम start करना चाहते हैं Thank you so much and good afternoon to all. Yes. Very welcome, Sumit ji, and very proud that we're presenting this opportunity for the first time on the Franchise India webinar. And friends, like Ashta mentioned, this is a very old family business. They have been running this business for nearly 48 plus years. And the company, the name comes with huge credibility, trust, and success, which they have achieved in these many years. A very popular brand, and I'm sure all Delhiites who have actually experienced the taste always go back. तो इनके बहुत सारे ऐसे customers हैं जो इनसे ही पास जाते हैं, वहीं से ही order करते हैं. And Sumit ji is the 3rd generation entrepreneur who's carrying this legacy forward. And for the very first time, they are inviting and they're selecting right partners and like-minded partners for their business. So without taking more time, I'll request Sumit ji to kindly take us through the business. And also maybe before we do that, Sumit ji, थोड़ा बहुत अपना जो background है, कैसे हमने शुरू किया और जो current हमारा business है, and what prompted you now to expand and look for like-minded people to expand the business? जी, हम लोगों ने start किया, like मेरे father ने start किया
ये बिजनेस हमारा। वी आर 3 ब्रदर्स, तो हम सब रेस्टोरेंट में ही हैं। और मेरे फादर ने स्टार्ट किया 1974 में, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राइज किया, बहुत अच्छे तरीके से सारा मेंटेन करके चले वो। और हम लोग को बहुत प्यार मिला वेस्ट दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी। तो हम लोगों ने मेरे फादर का सेम ऐसे उसके बाद हमने 50 एक और ये जो फ्रेंचाइज है वो मैं चाहता था कि कुछ अच्छा करूं कि आगे बढ़ सके, लेगेसी मेरे फादर ने हमको दी है उसको आगे बढ़ा सके। तो वो आप लोग ये करते हैं जो को लेके रहे हैं, इस तरीके से है। जैसे दो, एक तो ये कि जब भी लॉकडाउन हुआ वो, बट हर आदमी को, हर इंसान अभी भी उसके बाद भी जब भी वो टाइम उसको घर से निकलना है, उसको एक फाइन डाइनिंग में जाना है, और इस तरीके से वो उसमें ज्यादा खर्च नहीं करता है। एंड यस, ईट गुड फूड और अपना चेंज करना चाहता है, कि अपना माइंड चेंज करना चाहता है। इसलिए हमारा है जो जिसमें जाना चाह रहे हैं उस कोई काम नहीं है। बेस्ट की जो हम जो इस तरह की वो आपको और लेना है। तो आप I think there's a problem with connectivity. If we can check. Yes, ma'am. So, ma'am, by the time he joins, can we request Ashokji to take us through the presentation? Yes. Thank you, Sonia ma'am. So, thank you, Asna ma'am. And good afternoon to everyone. And so today we have the opportunity to present basically Mr. Bhushan Sethi. So it's a restaurant business since 1974. Some of the key aspects basically Mr. Sumit Sethi is already highlighted, but I think because of some of the internet issues and inconvenience, I think we were not able to hear him clearly. So, but we will take his journey through the presentation. So, Bhushan Sethi, this business was started in 1974 at Punjabi Market, Tagore Garden. Then Sethi's Dine, and this new business, they have incorporated in 2021 after a brand legacy of 5 decades. And so basically take the business into the casual dining restaurant system. And the vision of the company is basically to be the leading family dining restaurant in India and impart our signature footprints in casual dining restaurant system. And their priority basically to provide fresh, delicious, and tasty food and family atmosphere at our restaurants. And their mission is basically to expand a casual dining restaurant outlets pan India via franchisee, and with the optimized capital investment and maintaining the high quality standards. So optimized capital investment is very, very key.
for casual dining restaurant business. And basically we endeavor to provide our customer ethnic North Indian food. So again, basically the Bhushan Sethi, their specialty in North Indian food, it includes basically veg and non-veg, both categories. And their aim is to basically create 50 franchise restaurant pan India. So it's a long-term plan, but they are initially they are targeting from Delhi itself. So their main objective is to basically create a world-class casual dining restaurant to provide finest quality for veg and non-veg food and achieve excellence in serving to customers. So they have basically a wide range of delicious dishes for veg and non-veg both categories. That was a specialty for Bhushan Sethi. So they have developed these specialty over the years, like in the past 50 years. So they are maintaining basically the taste of the dishes, quality, flavor, freshness, deliciousness, healthy food, and basically the cooking recipes, price, and the service atmosphere and experience. So these are the broad specialties of the Bhushan Sethis, why they are famous in basically in Western Delhi, especially in Rajouri Garden. And then how it was basically founded. So it's a brief history about Mr. Bhushan Sethi. So he was born in Lahore in Pakistan, and he was migrated to India in his childhood. And so he was a very basically passionate about the food and restaurant business from his childhood. And he has started this business in 1974 in Samnagar, Punjabi market. And in 2004, again, they have set up another dhaba in Rajouri Garden by the name of Sethi's Dhaba. Then basically, so they are basically specialized in the North Indian food, and so they are in the basically the top players in Delhi food market business. And so he was a tested face in the restaurant business across Delhi. He's a well-known face in Western Delhi, and he has influenced and inspired thousands of lives through his personal experience and practical life. And he was a true inspiration for many people who were basically involved in the food and restaurant business directly or indirectly. And he has developed basically the unique recipes and over the years. And basically, so it was a dream of Mr. Bhushan Sethi to take this business pan India through a casual dining restaurant system. So that was the brief history then. So basically now Mr. Sumit Sethi, so he is taking his father's dream and basically expanding this business across India. So Sumit Sethi he's the basically managing director and owner at Sethi's Dine. He is equally passionate of the food and restaurant business since his childhood, like his father. And he received basically the holistic training under the direct supervision of his father. And he worked with his father like for 20 plus years under direct supervision. And he has total working experience of more than 25 years in the food restaurant business. And over the years, he has basically developed the skill sets and expertise, including efficient in running dhaba, small and large and medium-sized format of the restaurant business. And he has the good leadership quality. He has basically team management and multitasking person. He's good capability in convincing power and inspirational for the staff under his guidance. And he's handling basically customer review effectively, and time and resource management is very, very important in this business. So he is very good at that, and he's the right decision maker. Now, so his vision is to take basically brand to the next level through his personal and professional efforts and expertise and commitment. Now, basically, so why basically the Indian, basically only the food market business, there are so many opportunities. So once we look at the Indian food markets, service market, it's a total basically 4.2 lakh crore market. So it's a large industry. Then we look at the
breakup of this industry is basically around 41% market is basically organized and 59% is unorganized. So the business that we are targeting, that is our organized business. So this includes restaurant and hotels, organized segment chains and organized segments. So that's account 41%. So we are targeting this business segment. Then we have the further breakup of this 40% basically. So that gives a breakup in terms of casual dining, QSR format, pub and bar, cafe and restaurant. Now we are focusing only on the casual dining. So this pie chart is already clearly gives us basically the clear target why we want to get into the casual dining business. Because if you look at we are already doing this format like casual dining, QSR format, we are already doing that. So that is only a 20% of the total market size. But casual dining is the 55%. So basically we are moving from QSR to casual dining business. Then we are looking at some more in-depth view of the organized food market, how it is evolved over the years, and what is the future for the next 4-5 years. So casual dining is the largest segment that we have already reviewed in the previous slide. This is 55%. After this, in 2020, this market basically, not only the food markets, all business segments were hit by the pandemic, and it's heavily impacted the industry. So, so this shows the impact, but overall, casual dining business is again estimated to grow at a rapid scale. Then we are looking at the market mapping. So basically, the strategic positioning of Bhushan Sethi, where we want to place our brand. So currently, if you look at the other players, and so Sethi's business, its current positioning is around 700 rupees price, and format is QSR. So from QSR, we are moving to the casual dining, and so we are taking this up the ladder in terms of price as well as the service. So if you compare the other players, so they are basically in the same category, but they are more expensive. So we are bringing basically affordable price at and high quality service and good quality food for our customers. Then we are coming to the basically casual dining restaurant. So what's a typical structure and requirement? So casual dining restaurant that we are targeting, so it will have a basically casual dining seating capacity, and it will have the facility for dining customers, then takeaways, deliveries, and catering. So this investment model is a franchisee owned and company operated business model, and capital investment requirement is around 50 to 60 lakhs for this business, and area and format is typically required basically 2,000 square feet to 3,000 square feet. And so then menus is already created by basically focused on the customer centric, and over a period of time, that staff requirement to run this store basically is typically requires to be 20 to 30 team size. And equipment basically, so brand will purchase the good quality new kitchen equipment as well as crockery and cutlery. Decor and furniture basically will have the well-designed, beautiful interior decoration and good quality furniture and furnishing. And licensing, basically obtaining the local licenses, permits, and NOCs to run a restaurant. Then food cost. So typically for our business, that's food cost around 40% of the final price of the dish. Then advertising and marketing budget, we are estimating like 3% of the revenue share will basically spend on. Then company is already basically under developing the billing systems, websites, and mobile app. And the expected sales that we are assuming for our 2,000 square feet model will be starting at basically 18 to 20 lakh rupees per month. And revenue share to the investor will be 17%,
And this is, if you look at the industry comparison or look at the competitors, it is higher than the competitor that offers for their investors. On payback period for this investment, it will be around 18 to 20 months. And agreement period will be the 5 years agreement. And after 5 years, basically, the investor can renew the contract with an additional investment of the 50% of the initial capex, or company has the option basically to acquire whole setup at a 25% of the initial capex. And so this is a FOCO model. So this does not have any minimum guarantee, no minimum guarantee, and no rentals. So basically, rentals has to be paid by the investor, or basically investor should have its ideal location for property. Then we are targeting the market. Basically, we want to focus only in Delhi. So if you look at the Delhi overall market size, so food market business in Delhi is 31,000 crores. And there are about 95,000 restaurants. Basically, this includes organized and unorganized, both segments. And overall, around 3 lakh people are employed in this business. So then we are coming to the most potential locations. So we have identified and did basically the rating and ranking of the locations. So we have taken basically 12 parameters for restaurants, markets, parking, road infrastructure, traffic, connectivity, cleanliness, public transport, neighborhood, safety, hospitals, and schools. And based on these parameters, we have basically rated and ranked out these locations. And we have created a weighted average analysis, and we found basically Jail Road, Janakpuri, Club Road, Punjabi Bagh, and Paschim Bihar. These are the 3 main prime locations that we are focusing. But these are not the limited locations. We can also have the options. We can evaluate some other locations if investor has some prime location at some other locations in Western Delhi or in North Delhi or Central Delhi, that can be also evaluated. So then we are basically looking at the investor profile. So first priority is basically the property owners with an investment bandwidth will have an advantage. So we'll basically priority will be given to the property owners who can invest in this business and take their revenue share. And second category will be the investor, but they don't have the location. They have the basically the financial bandwidth, but they want to invest. So basically the rent has to be paid by the investor. And the revenue share will remain the same for the both categories, 17%. Now, so what is the benefit to the investors? So once we look at the business model, it's a very lucrative and profitable business model. So brand brings the value in terms of their 50 years of their legacy, their stable business model, good profit margins, standards and operating procedures in all aspects of the business. And brand is already known for its taste, quality, freshness, and unique flavor dishes. And brand will continue to basically develop new R&D and new mouth-watering dishes for the customers. And management has basically the 55 plus years of industry experience in this business. And so they have the professional expertise and commitment for the business development. And overall, it has a positive outlook on and growing market segment. So the net benefit to the investor, basically investor will have the freedom from all daily operations. They don't need to care about the day-to-day operations, hiring, training, and the other management like procurement. So investor will get freedom from all operations, and investor will get a guaranteed revenue share on a monthly basis. It is depending on the investor. If investor wants on the weekly basis, monthly basis, or yearly basis, this revenue care shared even on the daily basis. Then basically it has the opportunity to earn basically 2 to 4 lakhs per month. That's the opportunity for the investor. And thank you. So we invite for all the investors to be a part of the
Bhushan Sethi's Dine restaurant business chain. Thank you very much. I would request Sonia ma'am just to take it for the Q&A session. Thank you so much, Shok, and thank you, Sumit. I think we did lose the connection initially. So, friends, I'll request all of you. This opportunity is open for the city of Delhi. So, all of you who have interest, please write your queries, and we'll take your questions also. And very quickly, I'll give a recap of the model that we talked about, and also a little bit, background on the industry. And if you look at, our country, India, we have always been a food loving country, and each region, having their own special cuisine because it's very, very diverse. And we have also seen in the last 20 years how the industry has actually evolved. But what has remained something which has not changed is, a consumer desire for convenience, socialization, and most important, I would say, is the quality of food service and the food. So great food and great service is something which will always remain important and, epitome of any food business. And even if we see maybe, 30, 40 years back, our introduction to eating out came from traditional family run businesses, like Sethis, which were running multi-cuisine restaurants and people, who have love for local flavors. And every city, these traditional family run restaurants where people actually swear, by as their favorites. And interesting is they don't even get fatigued. बहुत सारे ऐसे cuisines हैं which you get fatigued, but this is one cuisine which people don't even get fatigued. How the industry, or I would say the first phase of food industry started, I would say somewhere in the mid 80s, and most of the Indian brands were running multi-cuisine restaurants offering various cuisines under one roof. And it was phase two, that started somewhere in the 2000, where we started seeing a very clear segmentation of formats which started to emerge, jahan pe QSR, CDR, FDR, bar lounges, all that started coming in. And Sethis, they are pioneer with running the business for about 40 years. They have perfected their system, processes, and all these years, they were not franchising or adding any partners. But this is the very first time, they have actually invited partners to come and join the business. And since they are very sensitive also on the last mile experience, jo a consumer and consumer restaurant mein aake leta hai, and also product consistency, they have decided that the entire day-to-day operations would be retained by the company. And the business model is where the investor would invest in the business, and the entire day-to-day operations is something which the company would invest their time and manpower. Is something which the company takes care of. We're looking at a simple format of 2,000 to 3,000 square feet. ये आपका family restaurant typically आपका business format है, which would have an investment of about 50 to 60 odd lakhs हमारा इसमें investment रहता है. And just to give you some dynamics also on the food business, typically आपका जो food cost होता है किसी food business में आपका 35-40% के बीच में रहता है. आपका जो यूटिलिटी कॉस्ट होता है वो तकरीबन आपका 10% के आसपास आपका रहता है. 20% इज टिपिकली योर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट, 15-20% आपका ऑक्यूपेंसी कॉस्ट की तरफ रहता है, एंड 12 से 15% टिपिकल आपका मैन पावर कॉस्ट की तरफ रहता है. एंड देन देयर इज आल्सो कॉस्ट टुवर्ड्स रॉयल्टी, बट इन दिस केस सिंस operations are being run by the company, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं होगा, rather the company would give you a revenue share. जो भी business restaurant पे आएगा उसका एक fixed revenue share है जो 17% है sales के ऊपर जो company आपको देगी. So I'll take some question for you Sumit ji, and friends keep writing in. अगर आपके पास property है, अगर आपके पास property है, that would be something that we would like to have maybe a first advantage given to. So anybody who owns a property, we would give them the first prerogative to open. But anybody who does not own a property, अगर आप keen है explore करने के लिए, आप please आप लिखिए. So Sumit ji, just to start off with जो पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ, हमने जो बात की, we talking about a franchisee owned company operated model. So जो इसमें फाइनेंशियल डायनामिक्स है, इसमें इन्वेस्टर जो होंगे वो सारी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, एंड द एंटायर डे टू डे ऑपरेशंस वुड बी रन बाय योर कंपनी, आपकी मैनेजमेंट रन करेगी. वी वांट टू गिव लिटिल बिट क्लैरिटी, जैसे सारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी करके देता है, तो ऑपरेटिंग खर्चों में क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी फ्रेंचाइज पार्टनर की? फ्रेंचाइज पार्टनर को कुछ भी खर्चा नहीं करना है, जो उसको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसका खर्चा है, कंपनी सारा खर्चा करेगी. फर्स्ट डे से फ्रेंचाइज पार्टनर को उनको
उनको प्रॉफिट आना शुरू होगा फर्स्ट डे फर्स्ट से ही। लाइक कंपनी जब तक अगर उसमें कुछ जब तक अगर कुछ जिस कहते हैं फॉर अ चांस हम सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रॉफिट नहीं आया कंपनी को, तो वो हम भी करेंगे। जो फ्रेंचाइज है उसको फर्स्ट डे से प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो भी हमारा अगर वो से लेते हैं, जो नए सिस्टम्स आए हैं वो हम सही हर एक अकाउंट्स में जो अकाउंट हम बोलेंगे डेली बेसिस पे मंथली और कंपनी करना चाहती है। ये जो मैंने ज्यादातर आपने सुना होगा कि लोग अगर एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग फ्रेंचाइज उसको रन नहीं कर पाते हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो उसके साथ क्वालिटी खराब हो जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन होने की पोजीशन पे आ जाता है। वो हम लोग उसको पूरा फॉलो अप करेंगे, हम लोग उसको पूरा उसको बैकअप क्या मतलब सारा कुछ कंपनी हैंडल कर रही है, तो हम पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको हैंडल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको और बेटर करते जाएंगे डे बाय डे। जी सुमित जी, इसमें जैसे अपने कॉस्ट रेंटल इज समथिंग जो फ्रेंचाइज पार्टनर देंगे एंड बाकी सारे खर्चे आप लेंगे, सो ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी वुड सारे बी खर्चे एंड रेंटल का जो पोर्शन है। जी रेंट हम लोग प्रेफर ये कर रहे हैं जिस जो भी है प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी ओनर ही रहे तो बेटर रहेगा। बट अगर किसी को लगता है कि हाँ कैसी पोजीशन कोई ऐसी है या कोई ऐसा point जिनको लगता हो कि हाँ बहुत अच्छा लगता है ब्रांड के लिए, तो विल गो विद दैट आल्सो। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। आई थिंक वी हैव लिटिल बिट ऑफ बैंडविड्थ इशू। सो सुमित जी कह रहे हैं कि ये तो फ्रेंचाइजी उन कंपनी ऑपरेशंस है जहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशंस कंपनी ही देखेगी, बिकॉज दे लिटिल सेंसिटिव अबाउट द लास्ट माइल एक्सपीरियंस जो कंज्यूमर के पास जाता है। दूसरा, प्रोडक्ट सप्लाई कंसिस्टेंसी ऑफ their product is something which is very very sensitive to them. Preferences to people who own their properties and 17% revenue share in a food business is very very good. जो भी business आता है उसका 17% would take care of your expenses also, and also is good enough to justify the return on the investment that you would do. So सुमित जी, मैं दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेना चाहती हूँ, इसमें अगर हम 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, सो ब्रॉडली इसमें हमारा जो ब्रेकअप क्या रहता है, कितना हमारा इंटीरियर की तरफ जाता है, पर स्क्वायर फीट कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, इसमें हम लोगों ने जो इसमें जो आपने लिया है वो 2 से 3 लाख रुपए जो है वो पर मंथ इन फ्रेंचाइज को प्रॉफिट जिसको सारा और ये जो कैसे है कि इसको किसी भी से फर्क नहीं पड़ता। ये जब भी मिलता है तो जैसे आप कहीं करना कुछ छोटे से 800 रुपए चीज है जिसमें उसमें जो मिनिमम लेके चल रहे हैं 1.5 साल खर्चा नहीं करना है कोई उसको उसमें का कोई ऐसी नहीं है जो उसको लॉस जाएगी। वो अगर लॉस है तो कंपनी उसको देते रहेगी, उनको प्रॉफिट सुमित जी, हम ना सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आई थिंक वी हैव लॉस्ट बिगर पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव सेड। देयर सीम्स टू बी अ बैंडविड्थ इशू। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट जो भी आपके क्वेश्चंस है आप लिखते रहिए। विल ट्राई एंड सीक द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। आई थिंक सुमित जी इज फेसिंग लिटिल बिट ऑफ नेटवर्क bandwidth issue at his end, but we'll pick up all questions that you have. We have Ashok also with us. If you can help Ashok in terms of picking up. हाँ,
if you can take it up, and friends keep writing any questions आपके सारे हम लेंगे, and दूसरा we'll also arrange maybe a physical one-to-one meeting आप जो करना चाहते हैं, outlet tour आप करना चाहते हैं, all that is something which our teams at Franchise India would facilitate for you. And I also see a question from Mr. Hitesh Kwatra ji. Hitesh ji, जो इसमें model है which initially the agreement period is for a period of 5 years. अगर 5 साल के बाद हम continue करना चाहते हैं अपना arrangement company के साथ, तो 5 साल के बाद क्या होता है, जो आपके outlet के interiors होते हैं, capex होता है, वो मांगता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिट्रेट हो जाता है, डेप्रिसिएशन उसमें होता है. सो अबाउट 50% जो भी आपका इनिशियल केपेक्स उसमें लगा हुआ है, तो उसका रिफर्बिश का इन्वेस्टमेंट है जो 5 साल के बाद उसमें लगता है. एंड देन वन कैन कंटिन्यू ऑन द सेम स्ट्रक्चर. आई विल रिक्वेस्ट अशोक इफ वांट टू टेक इट अप एंड इलैबोरेट. Thank you, ma'am. So basically, I'll give some brief about basically the cost breakup. If you look at the total investment of the 2000 square feet model and 3000 square feet model, there's two formats we are considering. So overall initial total investment is 48 lakh for 2000 square feet and 63 lakh for 3000 square feet model. And for the initial fit out cost is basically starting around 1200 rupees per square feet. So it is basically 24 lakh for 2000 square feet, and it will cost 36 lakh for 3000 square feet model. And kitchen equipment for both formats, it's cost around 10 to 12 lakhs. And other equipments basically around 3 to 4 lakhs for the other equipments. Then initial stock is basically rotating stock. So it's around 2 lakh rupees of initial stock is required. And signage cost is around 1 lakh. And initial launch marketing budget, we have estimated capped it at 2 lakhs. So at the time of inauguration, and this investment is required. And trade licenses and NOCs all will cost another 1 lakh. And we have a 5 lakh of the franchisee fees for both models. So that is the total breakup of the cost. Right. Now I'm coming back to the question of the after 5-year engagement. So there's a two formats that you have already elaborated and explained. And second option was that company will acquire everything, whole infrastructure at 25% of the initial capital. That's another option. And so I'll just repeat, इसमें दो ऑप्शंस है. अगर 5 साल के बाद आपको लगता है आपने कंटिन्यू नहीं करना, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई है 50% इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको देगा और वो एक्वायर कर लेगा, एंड दे वुड टेक इट अप. अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू विल नीड टू इन्वेस्ट एंड रिफर्बिश दैट पर्टिकुलर आउटलेट. एंड एक चीज और थी, आई थिंक इफ वी कैन समझिए, अगर आप इसमें रेंटल, आई वांटेड टू रिकन्फर्म, रेंटल हमारा is not, because most of the properties that we're looking at are either owned by the franchise partner. In case you have to hire a location, अगर आप रेंट पे जाते हैं, we would have maybe a separate discussion and that to see how that can be worked out. And I'll also take a question which I see coming from Mr. Rajneesh Khurana ji, and इसमें and he's asking on the locations. And Rajneesh ji, मैं आपको whatever projections we are giving for the new franchise model, if you look at their older outlet जो run कर रहे हैं, their outlets are doing much higher, at least 4x 5x revenue इनके existing locations already कर रही हैं ये business, and there's a big demand. I will request, अगर आप interested हैं, जो existing locations हैं इनकी जहाँ पे run कर रहे हैं, वहाँ पे आप जरूर आप visit कीजिए. और जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ये रेवेन्यू प्रोजेक्शंस कंपैरेटिवली हम छोटे प्रोजेक्शंस के ऊपर ले रहे हैं. वी हैव नॉट कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल वेयर द बिजनेस और रेवेन्यू कैन कम, एंड ग्रेजुअली इस लेवल तक आते आते भी टाइम लगता है. एंड सुमित जी, इफ यू कैन आल्सो एक्सप्लेन फर्दर, अगर हम 18-20 लाख रुपए का हम एक रेवेन्यू हम देख रहे हैं, तो इसमें ऑन एन एवरेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दैट 18-20 लाख kind of a benchmark? Will it start from the second, third month? क्योंकि pre-marketing भी हम करते हैं, we will reach out to our maybe our target audience, so it takes time, gestation time लगता है एक optimum level की sales पे आने के लिए. जी, am I audible? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. जी जी. Hello.
हाँ जी, सुमित जी, you can speak. What we want to know, हमने जो 18-20 लाख हम एवरेज सेल्स की हम बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है उस सेल्स बेंचमार्क को हमें टच जी, करने हम में? लोग उसको मैक्सिमम ब्रांडिंग करेंगे, मैक्सिमम हाईलाइट करेंगे अपने business को फर्स्ट से ही। बहुत सारे उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम फर्स्ट डे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ मंथ से हमें एक बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। Sure, Sumit ji. Yeah, ma'am, I would like to just elaborate further, ma'am, on this. So basically, ma'am, if you divide basically in the quarterly, so we are targeting in the first quarter around 12 lakh sales in the first quarter, and we are just estimating by the fourth quarter it will be around 25 lakhs per month. So that's the sales we are targeting in terms of projections. And so it is basically, if you look at the other competitors, so they do business of like around from 28 lakh to 35 lakh. And our initial projection is 18 lakhs. That's much lower, even half of the industry standard. So we are very confident about these numbers. Sure. Helpful. And friends, keep writing. अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप लेना चाहते हैं, आप प्लीज लिखिए. We'll answer all these questions. But most important, I would also urge, ये सिर्फ दिल्ली के लिए हम फिलहाल हम देख रहे हैं. And the company has also, kind of shortlisted locations where they currently have a big demand coming in, but क्योंकि उनका local presence उस locations पे नहीं है, so they're not able to cater to these locations. And if you saw in that presentation, we have captured some of the sites, कुछ locations हैं जहाँ पे हम खोलना चाहते हैं. If you come from these locations, and most importantly, अगर आपकी कोई ऐसी property है जहाँ पे business हम food का हम शुरू कर सकते हैं, please reach out to us. The average potential which we are talking about is comparatively, taken on a lower benchmark, 18-20 का, and which is I would also say is lower than the industry benchmarks. Industry benchmark typically, अगर ये format हम देखते हैं तो आपका तकरीबन आपका 30-35 लाख का एक average sales एक restaurant करता है. They have taken at an average of 20 lakhs and it also builds up from there. अगर हम 20 लाख का average हम लेके चलते हैं, 17% जो आपका revenue share होता है वो तकरीबन 3-3.5 लाख का आपका business होता है. And that I feel is a very good, business or a income stream जहाँ पे आपके खुद की time involvement नहीं है. दो तरीके के business होते हैं, एक तो आपका return on time involvement business होता है, एक आपका return on investment involvement business है. Since the investment is done by you, time आप operations में नहीं involve करते हैं, so the company gives you a revenue share and that covers the entire investment that you have done. And the entire time to operate the business is something which company takes care of. Operationally कोई expenses आपके नहीं होंगे, सारे operational expenses company bear करती है. Another thing, because which comes in the mind of many people, because the company is running day-to-day operations, what is the kind of visibility that we give to our franchise partners? किस तरीके का कोई POS system है that we would integrate जहाँ पे एक franchise partner देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सेल उस आउटलेट पे हो रही है. जी जी, तो इसमें जो भी हमारी बिलिंग होएगी और जो भी एक जो हमारी बिलिंग है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी. वो हर चीज जो है वो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं. वो आके उसमें चेक भी कर सकते हैं रोज के रोज. और जो भी हमारा जो इनकम आती है वो हैंड टू हैंड अगर वो चाहेंगे तो बैंक टू बैंक वो सीधे हमारे इनके अकाउंट में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. जी. Helpful. And friends, I'll also introduce, we have Mr. Sanjay Bhatt. He's heading this project along with his partners based in Delhi. We also have Hiteshi present today. So I'll request Sanjay, if you want to take up some questions, and friends, I'll request all of you, if you're keen to explore further, अगर आप outlet देखना चाहते हैं, experience करना चाहते हैं. I've myself tried their products and I'm, in South Delhi we don't get a flavor like this at all. So expansion हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली में, and जो locations आपको बताई गई थी वो ज्यादा हमारी focus में है. These are locations we want to maybe prioritize in the first phase of expansion, followed by maybe other locations. But strictly Delhi में देख रहे हैं. NCR I'm not too sure. Sumit ji, are we looking at even Faridabad, Ghaziabad, Noida, NCR at this stage, or जी नहीं, फर्स्टली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे स्टार्ट, क्योंकि यहीं पे मुझे लगता है कि लोगों का इतना प्यार मिला है और हमेशा से मिलता आया है, तो हम उसी को थोड़ा फॉलो अप करके स्लोली एंड स्टेडली विल गो. इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम कोई गलती करें बिजनेस में और किसी का नुकसान हो या किसी का नुकसान हो या हमारा वो सेम है.
सो वी वांट टू ग्रो विद पीपल। सो हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको स्टार्ट करें, ग्रेजुअली हम लोग बाद में एनसीआर भी करेंगे, बट फिलहाल वी आर गोइंग फॉर वेस्ट दिल्ली एंड सेंट्रल दिल्ली। श्योर श्योर सुमित जी। जी, यू वांट टू टेक एनी फर्दर क्वेश्चंस अगर हम लेना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। सुमित जी, थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि जो भी आपका करंटली आउटलेट चल रहा है उसमें क्या पर मंथ के हिसाब से क्या सेल चल रही है, सो दैट नेक्स्ट फ्रेंचाइजी जो प्रोस्पेक्टिव हो उसको थोड़ा आइडिया आए कि अभी एज सच कोविड के टाइम में भी हमारा कहाँ तक गया, और फर्दर अभी जैसे ओपन हो गया तो क्या जी। एक आइडिया के हिसाब से कहाँ तक सेल जा सकती है, जो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए फुटफॉल जी। के हिसाब से। जो हमारी सर जो लॉकडाउन में भी रहा है, वो जैसे मैंने आपको बताया, ये बिजनेस ऐसा था कि ये ऐसा है कि आपकी नेसेसिटी है। आप घर पे अगर आप लॉकडाउन में भी आप 10 दिन बैठ जाएंगे तो आपको 11वें दिन मन करेगा कहीं बाहर जाना है फैमिली को लेके। आपको स्ट्रेस आउट जो अगर आप हो रखे हो तो आपको उसके लिए आप लग्जरी में ना जाके कैजुअल डाइनिंग में आप जाते हैं। हमारे बिजनेस में उतना इफेक्ट इसका नहीं आया। ये सब जानते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस एक ऐसा है जो लॉकडाउन में भी उतना इफेक्ट नहीं करा है बेसिकली। अगर और इसके बाद में जो अभी आफ्टर लॉकडाउन, मुझे लगता है हमारा बिजनेस उससे बहुत बेटर हुआ है। सो आई डोंट वांट टू शेयर द एग्जैक्ट फिगर, बट इट्स गोइंग वेरी गुड राइट नाउ। यस। और जो लोग हमें जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो मिलते हैं वहां पे, दे ऑल नो कि हाउ मच वी आर एक्सपैंडिंग एंड हाउ मच गुड वी आर रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। यस। नहीं, बिल्कुल वेरी राइट। और लेगेसी है 50 इयर्स की, आई थिंक एक आपका एक लॉयल कस्टमर है। जी। अगर शॉप नहीं भी ओपन होगा तो वो लॉयल्टी तो इतनी रहेगी कि वो ऑनलाइन आपसे मंगवा सकता है। बिजनेस कहीं पे भी कम नहीं हुआ, स्पेशली जी। एफ&बी। जी बट सर। वो बिल्कुल ठीक है, और 50 साल का लेगेसी अगर हम कैरी कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी और कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए सर हमने यही सोच के करा कि जो ज्यादातर सुनने में आया था, आप और कई ब्रांड देखेंगे जो लोग फ्रेंचाइज तो खोल रहे हैं, बट उनके पास उतना जो फ्रेंचाइज है उसके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको रन करने के लिए, वो उतना प्रेशर ले ही नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए हमने सोचा कि हम स्लोली एंड स्टेडली करेंगे इसको, बट इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि उसमें जरा सा भी ऐसे नहीं रहेगा कि क्वालिटी इशू आए, कि लेबर इशू आए उनको, वो सब हम लोग हैंडल करेंगे। और फ्रेंचाइज को तो फर्स्ट डे से ही उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा। एंड आफ्टर 5 years if फ्रेंचाइज वांट कि भैया हमको चाहिए ये, तो हम उनको चला चलाया बिजनेस बिल्कुल रन करता हुआ उनके ऊपर उनको दे देंगे। और उसके लिए थोड़ा सा जो भी हमारे जो उसका पार्ट होगा पेमेंट का, वो हम उनसे चार्ज करके हम उनको चाबी और हैंड ओवर उनको कर देंगे बिजनेस। दे कैन रन विद देयर ओन। श्योर। सो सिंस ऑपरेशन सारा आपके पास है, तो फ्रेंचाइजी को इन्वेस्टमेंट के बाद और कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगा कहीं पे भी, डे इन डे आउट में या वीकली नहीं, मंथली? हम उनको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे, बट इफ दे वांट दे कैन कम एंड सी, कोई ऐसी बात ही नहीं। ओके। जी। और लोकेशन अगर कोई ऐसी मिले, क्योंकि अभी हम बात करें दिल्ली में, बट दिल्ली एनसीआर में भी कोई ऐसी लोकेशन आती है हमारे पास, और जी। अगर वहां पे भी हम कुछ देख सकते हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं, करेक्ट? जी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपका सप्लाई और आपका ऑपरेशनली कोई ज्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी सर। कोई प्रेफरेबली तो सर दिल्ली में ही रहेगा, क्योंकि ठीक है। मैं अभी जैसे हम लोग अभी राजौरी में हैं और हम तिलक नगर में हैं, तो बट अभी हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे पंजाबी बाग, प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार, इसको हम लोग प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। बट अभी एक इंक्वायरी मैंने आज देखी थी, अभी उसमें सीपी की भी थी, वी कैन गो फॉर दैट आल्सो। जी। श्योर। और प्रेफर हम कर रहे हैं कि उसका प्रॉपर्टी अपनी हो। जी सर, बिल्कुल। हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ओनर से ही हम लोग डायरेक्ट डील करें, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में रहती है तो थोड़ी सी उसमें परेशानी आ सकती है। तो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम लोग डायरेक्ट पार्टी, जो डायरेक्ट ओनर है उनसे ही हम लें। और उनको भी ऐसा फील आएगा जैसे कि दे आर ओनिंग देयर ओन रेस्टोरेंट। जी। जी, उनको ये नहीं लगेगा कि हम कोई किराएदार या कुछ ऐसे, उनको लगेगा कि हम लोग खुद एक बिजनेस कर रहे हैं और एक अच्छा ब्रांड हम, क्योंकि 5 साल के बाद अगर वो चाहते हैं
तो हम उनको हैंड ओवर करेंगे, चला चलाया रेस्टोरेंट, उनको एक नया चला चलाया बिजनेस उनके ऊपर उनको हैंड ओवर करेंगे हम। और अगर वो चाहेंगे और अगर वो चाहेंगे कि नहीं कंपनी ऑन करे तो कंपनी आगे उसको रिकंटिन्यू करेगी, नो प्रॉब्लम फॉर दैट आल्सो। ओके, तो इसमें कोई रिन्यूअल चार्जेस है अगर कंटिन्यू करना है आपने कोई आगे एग्रीमेंट का? जी हमारा तो नहीं होगा, बट अगर अगर वो लोग फ्रेंचाइज चाहता है कि वो उसको टेक ओवर करेंगे जी, तो जो मिनिमम चार्जेस होगा वो हम उसमें पहले बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ओके, और कंटिन्यू आपके साथ करे तो कुछ और फीस लगेगा 5 साल के बाद? सर उसका जी नहीं सर, उसका कोई फीस नहीं है। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसका कोई फीस नहीं है। ओके सर उस पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, दैट्स बेसिक देखो रिन्यू करने के लिए सर बेसिकली दैट्स वन कंडीशन कि उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% कैपेक्स री इन्वेस्ट करना होगा फ्रेंचाइजी पार्टनर को उसके रिन्यू। दैट्स ओनली। ओके, ऑलराइट, श्योर। सो अशोक, अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से ओवरऑल, जो कि हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को हेल्पफुल हो कि थोड़ा और समझने में, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? couple of things which I would take and सुमित जी अगर आप बताएं अगर हमारा typical APCs क्या होते हैं business और and pricing हम किस तरीके से रखते हैं, how competitive also these pricing are, this would be helpful for us to know. जी इसमें मैम एक आपने भी देखा होगा दो तरीके की कैटेगरी है। एक कैटेगरी आती है, एक ढाबा कैटेगरी है जो क्वांटिटी हम लोग पूरी देते हैं। आप अगर आप और एक एक अलग से एक जो है वो है पब्स एंड क्लब्स जो या जो अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, जो अगर हम उनको ऑफर करेंगे प्लेट सिस्टम तो दे आर सेइंग कि बटर चिकन पर प्लेट 800 रुपीज। और अगर हम ढाबा में आते हैं तो हम बोलते हैं पर प्लेट, यानी पर प्लेट मीन्स पूरा फुल पोर्शन ऑफ चिकन, दैट इज ऑफ 540 रुपीज। सो हम लोग जो है हम लोग दोनों को बीच में एक कैटेगरी बना रहे हैं जिसमें फैमिली जो है फाइन डाइनिंग में जाएगी और आपको एक अच्छी से अच्छी एम्बियंस मिलेगी और एक इन दोनों के बीच का प्राइस मिलेगा और बेस्ट फूड क्वालिटी जो ढाबा की जो लोग पसंद करते हैं वो मिलेगी। Absolutely. And friends, I would only say, if you really want to believe what business they are doing, और एक location की बहुत पुरानी है and कई बार कुछ locations पे और कुछ business में ना बरकत और blessings बहुत होती हैं, and I would say this is one of the businesses which has been very very successful and all these years they have restrained themselves. उन्होंने franchising नहीं किया, उनको लगा जो इनकी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है या अगर एक्सपैंड करते हैं डाइल्यूट हो जाता है, दिस द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव कम फॉरवर्ड टू डू दैट। द एंटायर ऑपरेशंस आर रन बाय देम और वो सारा का सारा स्टैंडर्डाइजेशन है, कंसिस्टेंसी है, वो कंपनी मेंटेन करेगी। इफ यू थिंक दिस इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू पार्टनर विद एंड अंडरस्टैंड इन depth because we did have some kind of lag in the network, we'll be more than happy to even share the entire working with you, entire I would say a business model जो भी आपको शायद समझना है डिटेल में। एंड दिस आई रिक्वेस्ट अगर हम 1-to-1 मीटिंग के ऊपर कर सकें and we'll be more than happy to even invite you for maybe a session, आधे घंटे का 1 घंटे का आप आउटलेट टूर भी कीजिए, आप देखिए how the business is performing and then make up your mind because this decision would last at least 5 years or maybe even beyond, so take that time out. And before we close I'll request सुमित जी एक मैसेज जो आप सारे अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं। यू मेंशन यू आर द सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपके फादर ने बिजनेस शुरू किया था and lot of people I also know they don't come from a food background and especially food की जब बात करते हैं, फूड फ्रेंचाइजिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स या फ्रेंचाइजीज भी जुड़ते हैं जो फूड बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, बट दिस इज वन बिजनेस इफ यू आर पैशनेट अबाउट and you understand the food dynamics, it is a very good business to be run. So this is open friends for both people who come with food non-food background because operational involvement आपकी नहीं है and you can put your property to also use. So over to you Sumit ji, any message that you want to give to the audience? मैं बोलना चाहूंगा कि ठीक है, हम लोगों ने अभी तक मुझे जो लगता है दो तरीके की हम लोग दो तरीके के रेस्टोरेंट जाते हैं, या तो वो प्रॉपरली एक लग्जरी विद लग्जरी एम्बियंस के साथ बहुत सारा हैवी बिल के साथ वो लोग हम लोग एंजॉय करते हैं। एक एम्बियंस ऐसा है जो ढाबे का है जिसमें खाना बहुत अच्छा और बहुत पर आपको एम्बियंस नहीं मिलता वहां पे। हम लोग
एक ऐसे कैजुअल डाइनिंग बनाएंगे जिसमें जो इन दोनों चीजों को कैटर करेगा, बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया खाना और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, और इतने उस बजट में जो एक लग्जरी जो ब्रांड जो खाना खिलाता है उससे 50% ऑफ कॉस्ट में। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी एक नई ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो लग्जरी जगह पे बैठी होगी, एक अच्छे इंटीरियर में, प्रॉपरली एक अच्छे इंटीरियर में, और बहुत अच्छा खाना खा रही होगी, और विद फुल ऑफ बढ़िया क्वांटिटी में भी। तो उनको बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा और ये नया होगा बिल्कुल। जी, Absolutely, बिल्कुल ठीक आपने बोला सुमित जी, and this is something which many I would say businesses miss out. So अगर मैं समझू ये ब्रिज है, आप फैमिली को लेके आ सकते हैं, you get the right ambience, you get the right portion size, and most importantly at the right price. And friends, I thank you all for being with us, and I request Sanjay, if you want to also say the last words as the closing remarks, followed by Archana. थैंक यू वेरी मच। और सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फॉर श्योर ये एक ऐसी लेगेसी ब्रांड है जिसको हर कोई नहीं देख सकता, एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीवन फॉर श्योर। ये दिस इज ओनली फॉर फ्यू हु आर एक्चुअली क्वालिफाइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बिजनेस को। और कोई भी अगर इसको शॉर्ट टर्म देख रहा है तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करिएगा। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक लॉन्ग टर्म। इन्होंने भी एक बहुत बड़ी जर्नी, 50 साल की जर्नी जो इनके फादर साहब ने, मेरी और सुमित जी के साथ काफी डिस्कशन भी हुआ है, उन्होंने मुझे वो बहुत पुराने फोटोग्राफ भी दिखाए जो कि इनके फादर साहब चलाते थे। सुमित जी उनके गोद में बैठते थे तब, मेरे ख्याल से 8-10 रुपए का उस टाइम फिश का एक 1 kg का कॉस्ट होता था। जी जी, वेरी डिलाइटेड टू नो ऑल दिस बैकग्राउंड। तो इसलिए अगर ये लेगेसी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत पैशनेट लोग जुड़ सकते हैं, और बहुत पैशनेट लोग ही आगे आना चाहिए जो एक लेगेसी ब्रांड को ओन करे, और उस लेगेसी ब्रांड को चलाने में उनका कंप्लीट फैमिली का होना बहुत जरूरी है, जो इस बिजनेस को आगे देख सकते। और वी आर ओपन फॉर ऑल क्वेश्चंस, वी आर ओपन फॉर ऑल डिस्कशंस, वन-on-one मीटिंग्स विद सुमित जी डायरेक्टली। हमारी तरफ से आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड होता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो अभी हम फ्लैश करेंगे उस पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। प्लस वंस वी गेट इन टच विद यू, we will see your profiling also, then we will take it up to CG level, where we will take any question. My friends and my investors who are there, please, any question you have, technical questions, we will for sure take right answers before joining hands, because we want right partners to join hands together, और एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छा इन्वेस्टर जो लॉन्गिट्यूटी देखे इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहिए। और हमारे को बड़ी खुशी होगी कि हम इस बिजनेस को हम आगे लेके चले, क्योंकि दिल्ली में हम भी है, दिल्ली में ब्रांड और दिल्ली का मार्केट, दिल्ली का टेस्ट, दिल्ली का जो रहन सहन है वो उस तरह का फूड है, उस तरह का नॉर्थ कल्चर है। और अब इसको आई एम श्योर दूसरे सिटीज में भी मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जो इस बिजनेस को हैदराबाद में लेके जाना चाहते हैं, दूसरी जगह लेना चाहते हैं। बट अभी हम सुमित जी का बहुत अच्छा मानना है ये बात, वी आर कंप्लीटली विद हिम, कि पहले मैं अपने क्लस्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, दूर जाऊं। मुझे ही इज नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस। वो चाहते हैं कि फादर साहब की जो लेगेसी है उसको आगे लेके चले और अच्छे पार्टनर्स के साथ जुड़े। अभी दिल्ली में हम स्ट्रॉन्ग अपना एक क्लस्टर बनाए, एक फ्रेंचाइजी, सुमित जी का मुझे वर्ड्स याद है कि मुझे एक फ्रेंचाइजी बने, मुझे उसको ग्रो कराना है। अगर वो ग्रो होता है तो मेरे लिए सक्सेस वही है। मुझे पैसों की इतनी चिंता नहीं है, पैसा आ जाएंगे, पैसे हमने बहुत कमाए हैं। एंड आई थिंक आई रियली वैल्यू सुमित जी आपके वो वर्ड्स, और इसकी वजह से हमें भी लगता है कि हम इस ब्रांड को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और सक्सेसफुल करा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आल्सो। आई एम श्योर आज थोड़ा सा बैंडविड्थ की कमी की वजह से, बट हम अगली मीटिंग इन्वेस्टर्स के साथ जो करेंगे वो जूम पे हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, 1-on-1 करेंगे और फिजिकल मीटिंग्स, बिकॉज हम दिल्ली में ही हैं। दिल्ली का इन्वेस्टर होगा तो हम फिजिकल मीटिंग्स में ज्यादा बिलीव रखेंगे। और सुमित जी का कहना भी है कि वो आके मिले, देखे, हमारे परिवार से मिले, बिकॉज ये दो परिवार का एक रिलेशनशिप जुड़ने वाला है। फॉर श्योर विल टेक इट अप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस, ओवर टू यू। थैंक यू। Sure. So thank you so much, Sumit ji. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks, Sanjay. Thanks, Ashok ji, for joining in today. All the dear friends, thank you so much for sparing time attending this particular webinar. Do connect with us at our business hotline number, which is 97176 83838. Also, share your suggestion, feedback with us at a
social handles, and you can write to us at feedback@franchiseindia.in. It's very easy to get the guidance from Sonia ma'am and Gaurav sir. Join them at their LinkedIn platform. They can provide you different information about different business opportunities, association and events we organize for all of you. And tomorrow, under our prime time webinar, we are bringing the international brand UFC Gym. The entire India team would come and talk about how you can become partner with them. Do registration with us to understand their business proposal. Registration can be done either by going on the Facebook page where we have shared the registration link, or write or call at business hotline number. Thank you once again for joining in today. Have a very safe day ahead. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you. Thank you so much once again.